Yes. So in last lecture we have seen the basic concepts of the waves. बराबर, तो waves के बारे में हमने बेसिक बातें कुछ देखी थी. आज के लेक्चर में भी हमको वही कंटिन्यू करना है. So let us see. Yes. तो कल के लेक्चर में हमने फेज का जो कंसेप्ट होता है तो वो डिटेल में देखा था, और उसमें हमने ये भी देखा था कि किस तरह से किसी भी वेव का इक्वेशन बनाया जा सकता है, कि नहीं. तो किसी भी वेव का जो इक्वेशन है इस तरह से दिया जाता है, दैट इज y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t माइनस kx. याद रखो ठीक से. दिस इज कॉल्ड एज द इक्वेशन ऑफ वेव. वेव का इक्वेशन ऐसा ही दिखता है, जिसमें जो t मतलब यहाँ पे टाइम होता है, ठीक है. k मतलब यहाँ पे प्रोपगेशन कांस्टेंट होता है, और जो ओमेगा है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कहलाता है. सो ओमेगा के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है. ओमेगा इज गिवन एज 2 पाई अपॉन कैपिटल T, और इवन ओमेगा कैन आल्सो बी रिटन एज 2 पाई इनटू n. Here n stands for the frequency of the wave, which is the number of waves produced per second. Remember, and this capital T gives us the time period of a wave. That is the time taken to produce one wave. And at the same time, here the second thing is k here. तो k का जो है मतलब होता है propagation constant, which is actually equal to 2 pi by lambda. And here this propagation constant gives us an idea about the rate of change of phase with respect to distance. Remember, the rate of change of phase with respect to distance. And now we'll see ये जो wave है इसका phase difference हम निकालने के लिए try करेंगे. This phase of the wave is simply this quantity omega t minus kx, which is there inside the bracket. This is called as the phase. It can change due to change in time, and at the same time it can change due to the change in distance also. For example, if we have a wave formed on this string, suppose ये एक string है और यहाँ पे एक wave है. अभी इस wave के ऊपर अगर हमने किसी भी एक पार्टिकल के ऊपर अगर फोकस किया, देखो अगर ये एक पार्टिकल के ऊपर अगर हमने कॉन्सेंट्रेट किया तो पता चलेगा कि ये पार्टिकल जो है it will start from mean position, then it will just move to the extreme position, then will come back to the mean position again, and then it will travel to the left extreme position, and then will just return back to the mean position, and we'll say that the one full oscillation is completed here, which requires the time t, capital T here. बट अभी इसमें अगर देखते हो कि एक यहाँ पे जब वो था तो उस समय उसका जो फेज है वो अगर मान लेते हैं कुछ जो भी था phi1 था, it is at an instant t1 suppose, and suppose after time t2 its phase becomes something phi2, ठीक है. तो t2 t1 इस इंस्टेंट पे उसका फेज phi1 है, और t2 इस इंस्टेंट पे उसका फेज phi2 है. So you can say the phi1 will be expressed as omega t1 minus kx, and phi2 can be obtained to be simply equal to omega t2 minus kx. Okay, so if we just take the difference of these two, means if we just subtract these two equations, then we can be able to get the phase difference, which will be simply, अब यहाँ पे obviously phi2 बड़ा होगा, phi1 छोटा होगा. That means we have to subtract equation 1 from this equation 2 here, so that we can get phi2 minus phi1, which is actually equal to omega common, and t2 minus t1 will be left inside, and this kx will just get cancelled because it is same. So in this way here we can see the phase difference at between the two instants of time t1 and t2 will be actually given by d phi, delta phi is equal to omega into delta t, where delta t is nothing but the time interval, which can also be written as t2 minus t1. तो इस तरह से ये एक बहुत important formula है in order to calculate the phase difference. Remember this correctly. And at the same time, if suppose we focus on two different particles of this wave, यहाँ पे अगर हम suppose ये दो अलग अलग particles के ऊपर अगर
कॉन्सेंट्रेट करते हैं। मान लो कि एक जो पार्टिकल है उसको हम बोल देते हैं P, ओके, जो कि यहाँ से ओरिजिन से x1 इतने डिस्टेंस पे है, ओके, और दूसरा पार्टिकल जो कि यह ओरिजिन से x2 इतने डिस्टेंस पे है, तो उसको हम बोल देते हैं Q, ओके, इट विल बी एट सम दिस पॉइंट हियर, ये x2 डिस्टेंस पे ये वाला जो पार्टिकल है तो उसको हम बोल देंगे Q, ओके। अभी P का जो फेज है एट दैट एनी कांस्टेंट सेम इंस्टेंट, ओके, अगर इन दोनों पार्टिकल्स का अगर हमने एक ही टाइम पे फोटो निकाल लिया, ठीक है, इफ वी टेक अ स्नैपशॉट ऑफ बोथ ऑफ दिस पार्टिकल्स वेरेवर दे मे बी, सो उनका जो x1 डिस्टेंस वाला जो पार्टिकल है P, उसका फेज कुछ है, उसको हम बोल देंगे phi1, ओके, एंड Q वाला जो पार्टिकल है उसका जो फेज है उस समय उसको हम बोल देंगे phi2 सपोज, एंड हियर यू कैन सी phi1 कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू omega t minus kx1. Here t is going to be the same just because we are taking the photograph at the same instant, that's why this instant will be the same, and phi2 the phase of the another particle which will be omega t minus kx2, because the time is going to be the same but only the difference in the distance, तो distance उनका अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे phase will be different due to the distances, different distances, and here once again we have to subtract the equation 1 and 2, but now this time we'll see clearly that this phi1 is going to be greater than phi2. Why? Because ये जो पार्टिकल P है it will start initially, or P will start before than Q starts its SHM, and that's why P will be in the more phase and this Q will start later, and that's why it will lag behind this P by some phase, and that is we have to find out. तो यहाँ पे इसलिए हम यहाँ पे phi1 में से phi2 माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 1 में से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे माइनस माइनस और यहाँ पे प्लस आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे ओमेगा टी जो है वो कैंसिल हो जाएगा, बीइंग द सेम, एंड हियर विल गेट दिस phi1 minus phi2 which will actually be equal to k is taken common, and what will be left inside this x2 minus x1, correct है? So here we can see this delta phi, that is the phase difference, will actually be equal to k times delta x. This is again one of the important formula for finding this phase difference. But what is the difference between this formula and this formula here? ये दोनों जो फॉर्मूले स्टार करके मैंने मार्क किए हैं उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो देखो ठीक से, this formula will be used only when we have to find out the phase difference between two distinct particles on the wave which are separated by the distance delta x, we can say, which is going to be equal to x2 minus x1, okay, and this formula will be used, this ये जो पहला वाला जो फॉर्मूला है this will be used only when we want to find out the phase difference of a single particle at two different instants, that is t1 and t2, okay, which are separated by the time interval that is delta t. If this time interval is directly given, we can just use this formula. Otherwise, if these two instants are given, we can find out this time interval by just subtracting, and then we can use it here. But remember that this formula includes omega, because ये जो है ओमेगा जो है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, and this formula includes k, okay, that is the propagation constant here. तो ये दोनों फॉर्मूले जो है वो फेज डिफरेंस के लिए यूज करने हैं, याद रखो ठीक से, फेज डिफरेंस, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड मेनी क्वेश्चंस आर आस्क्ड टू फाइंड आउट द फेज डिफरेंस। तो फेज डिफरेंस ढूंढने के लिए आपको बोला जाता है एमसीक्यूज के अंदर, तो उस केस में आपको ये या तो ये वाला या तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, जिसमें फेज डिफरेंस किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है वो मैटर करेगा, क्योंकि अगर फेज डिफरेंस हमको निकालना है दो डिस्टिंक्ट पार्टिकल्स का, तो उनके बीच में का डिस्टेंस हमको चाहिए डेल्टा एक्स, बिल्कुल, और हम ये फॉर्मूला यूज करके फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं आराम से। और अगर हमको फेज डिफरेंस पूछा है एक ही पार्टिकल का लेकिन दो डिस्टिंक्ट इंस्टेंट्स पे, तो उस केस में हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना होगा, और उसके लिए हमको या तो टाइम इंटरवल चाहिए या तो वो दो इंस्टेंट्स चाहिए जिनके बीच में हमको फेज डिफरेंस ढूंढ के निकालना है, ओके, ठीक है, ये पॉइंट आया समझ में सबको ठीक से? If you have any doubt, you can put it in the chat box fast.
Okay, so let us move further. अभी देखो ये तुमको पता होना चाहिए कि सिंस द इक्वेशन ऑफ वेव इज लाइक a sin ओमेगा t माइनस kx, और ऑलरेडी तुमने वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन बनाया है वेव का. If you remember, in regular you already studied there is a relationship between the velocity of the wave, frequency of the wave, and wavelength of the wave. And if suppose there is a wave which have a wavelength lambda, and suppose the frequency of the wave is n, and suppose that this period of the wave is capital T, and this velocity of the wave is v, then we can define the velocity of the wave to be simply the distance traveled per unit time. करेक्ट है? तो ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है वेलोसिटी का. इसमें अगर हम एक वेव के ऊपर अगर फोकस करते हैं, तो एक वेव जब तक पैदा होगा तो उसमें वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लैम्बडा इतना डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा जरूर. और अभी लैम्बडा डिस्टेंस अगर ट्रेवल कर रहा है तो एक वेव के लिए, लेकिन पैदा होने के लिए कितना टाइम लगता है, what is the time required for one wave to produce? So that time is called as time period, that is capital T here. And hence we can say this velocity of the wave will actually be equal to distance traveled, which is lambda, upon the time required, which is capital T. But already we have that 1 upon T, that is the one upon reciprocal of time period, is called as the frequency. And hence we can get this replaced by n here. And if we replace this 1 upon T by n, then we can get the relationship between the velocity, frequency, and wavelength of the wave, that is v is equal to n lambda. Remember, this is a very powerful equation in this wave section. And also we can see this velocity of the wave is equal to n lambda. इसको हम क्या करेंगे, देखो 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी करेंगे. तो देखो ये पे क्या बनेगा, 2 पाई n इंटू लैम्बडा बाय 2 पाई. ओके, सो इससे अभी यहाँ पे देखो 2 पाई n क्या बनता है, 2 pi n के लिए हमको पता है ऑलरेडी, it becomes omega, right? And what is this lambda by 2 pi? We already seen in the last lecture that 2 pi by lambda is nothing but k, that is propagation constant. So automatically this lambda by 2 pi becomes the reciprocal of this k, and hence we can replace it by k, 1 upon k. And if we just use it here, then the velocity of a wave can be obtained to be simply equal to this whole thing to be replaced by omega. And here this whole thing will be replaced by 1 upon k, as we know here. So accordingly, we can get this velocity of the wave to be equal to omega by k. This is again another important equation for velocity. Remember, okay? तो velocity के लिए दो equations हमको मिल गए. एक तो ये velocity of the wave, which is n into lambda, और दूसरा omega upon k. You can remember it like this. In general, if suppose we have the equation of a wave given by like this, a sine and something into t. Okay, मतलब suppose for example 20 times t minus something into x. Suppose for example 100 times x. Okay, so suppose this is the equation of any wave in general, then we can clearly find out the velocity of that wave to be simply by dividing this omega by k. Correct है? So omega मतलब क्या है यहाँ पे, it is the coefficient of t. Correct है, in the equation of wave. तो इस वेव के इक्वेशन में t का कोएफिशिएंट कौन है, तो इन जनरल वी हैव टू रिमेंबर इट इन दिस वे, द कोएफिशिएंट ऑफ t upon the coefficient of x, that is going to be the velocity of the wave. Sorry, okay. तो यहाँ पे इस केस में अगर देखेंगे तो t का कोएफिशिएंट कौन है 20 और x का कोएफिशिएंट कौन है 100. So what is the velocity of the wave? It will be simply 20 upon 100. That's it. It's that simple. Okay, so 20 by 100 comes out to be 0.2 meter per second. That's it. The velocity wave is moving with the speed 0.2 meter per second. Remember. तो इस तरह से हम वेव का वेलोसिटी निकाल सकते हैं आराम से. एंड दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर वेव वेलोसिटी. ओके, अभी इसमें देखो अगर सपोज एक वेव मान लो कि एक मीडियम छोड़ के दूसरे मीडियम के अंदर अगर इंटर करता है, देखो सपोज ये यहाँ से दूसरा मीडियम चालू होता है, टेंसर मीडियम सपोज फॉर एग्जांपल.
Okay, this is the medium. Okay, and suppose the wave is going to enter from this first medium into this second medium. Okay, this is the denser medium, we can remember, and this is going to be the rarer medium here. When the wave enters from such a from rarer medium to denser medium, what happens is its wavelength gets decreased, and at the same time its velocity also gets decreased. Remember, velocity or sorry, wavelength or velocity दोनों जो है वो change होते हैं. If the suppose the wave is traveling from rarer medium to denser medium, then in that case the velocity of the wave will increase. Remember, अभी इसमें एक बात याद रखो कि लाइट के बारे में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में हम ये देखते हैं कि whenever the wave enters from rarer medium to denser medium, okay, its velocity 100% decreases. Okay, so when the light wave enters from rarer medium to denser medium, its velocity decreases, and at the same time wavelength also decreases. But this happens in case of the light, or in general we can say electromagnetic waves. Okay, but in case of the mechanical waves like sound or any transverse wave or longitudinal waves which require medium here, in that case, it happens that whenever the wave enters from the rarer medium to denser medium, its velocity in fact increases, and also the wavelength actually increases. ये एक important बात है जो हमको याद रखनी है अच्छी तरह से, जिसके ऊपर MCQs फोकस किए जा सकते हैं. Velocity and wavelength both increases, and that is also in proportion because the frequency remains constant. देखो यहाँ पे अगर suppose ये एक wave यहाँ से enter कर रहा है, और अगर यहाँ पे जैसे ही वो इंसिडेंट होता है इस डेंसर मीडियम के सरफेस पे, so immediately what happens is the wavelength and velocity will just get increased, and because of that the velocity as well as the wavelength will also increase. If suppose wavelength of the wave in the rarer medium is considered as lambda 1, and suppose that its velocity in the rarer medium is considered as v1, and suppose that in the denser medium, the wavelength is considered to be lambda 2 and velocity is considered as v2. Then we can see clearly that in the rarer medium, we can say we can get a relationship between velocity, frequency, and wavelength like v1 is equal to n into lambda 1. Okay, and here in case of the denser medium, the same two things, velocity and wavelength, will be related by this equation v2 is equal to n into lambda 2. देखो ठीक से यहाँ पे, अब यहाँ पे हमने n को n1 n2 नहीं लिया, क्यों? क्योंकि it's going to be the same. Remember, the frequency of a wave is always the property of the source. It never changes unless and until source will change. For example, if this tuning fork is producing these waves, then the frequency will never change so far as tuning fork is kept constant. Unless and until the tuning fork itself is changed, the frequency will never change. हाँ, अगर tuning fork ही अगर बदल दिया, अगर हमने दूसरा ट्यूनिंग फोर्क अगर लाया, तो उस केस में उसका फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा जरूर, नो डाउट. लेकिन जब तक ट्यूनिंग फोर्क सेम है, तब तक वो उसी फ्रीक्वेंसी के वेव्स पैदा करेगा जो उसका नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाता है, याद रखो ठीक से. और वो फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलेगा इवन द वेव एंटर्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम. रिमेंबर, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट. Frequency is the property of source. It never changes so far as source doesn't change. And even medium, when the medium changes from when the wave enters from one medium to another medium, the frequency remains constant. ये बिल्कुल अंडरलाइन करने जैसी बात है, याद रखो ठीक से. Yes, Atharv is asking whether amplitude will change or not. Certainly, amplitude will also change. Good question. Basically, whenever the wave will enter from one medium to another medium, the amplitude will change 100%. क्योंकि क्या होता है कि उसमें होता है ऐसा ना कि whenever a wave gets incident on a surface of denser medium, a part of that wave is just getting reflected, and the remaining part only is just getting transmitted. So अब यहाँ पे according to the law of conservation of energy, we can say that the energy of incident wave, this is suppose the incident wave, okay,
इट इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव प्लस एनर्जी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव। तो ट्रांसमिटेड वेव के अंदर जो एनर्जी आएगा तो वो, और रिफ्लेक्टेड वेव के अंदर जो एनर्जी आएगा वो कहाँ से आया है? इंसिडेंट वेव के अंदर जो एनर्जी है वही तो बटा हुआ है ना, दोनों के दो पार्ट्स में बढ़ गया है। तो इसलिए जो रिफ्लेक्टेड पार्ट है उसके अंदर जितना भी एनर्जी जाएगा वो कम हो जाएगा और बचा हुआ एनर्जी सिर्फ ट्रांसमिटेड वेव के अंदर जाएगा। उसकी वजह से हम 100% ये बोल सकते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ, एंड ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड, अगर एनर्जी अगर कम हो गया तो ऑब्वियसली एम्पलीट्यूड भी कम होगा जरूर, क्योंकि एनर्जी और इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। So therefore we can say that whenever the wave enters from one medium to another medium, its amplitude decreases, no doubt. बट यहाँ पे हम ज्यादा उसके ऊपर फोकस नहीं करेंगे, ठीक है? वो आगे चल के आपको वो स्टडी करना होगा कि कितना वो एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। इट डिपेंड्स ऑन द structure and properties of that medium from which it is getting reflected or refracted. Okay, तो यहाँ पे ये समझ सकते हो कि frequency remains constant and wavelength and velocity both changes when the wave enter from one medium to another medium. So we get these two equations, v1 equal to n lambda 1 and v2 equal to n lambda 2. So if we take the ratio of these two equations, then we can get simplified it as v1 upon v2 is actually equal to lambda 1 upon lambda 2. Remember, so the ratio of velocities is always same as the ratio of wavelengths. तो इसमें आपको इस इन चारों में से अगर कोई भी तीन चीजें अगर दी है तो यू कैन फाइंड आउट द फोर्थ इजीली, सो अकॉर्डिंगली। ओके, और इसमें भी एक बात याद रखो कि व्हेनेवर द वेव एंटर्स, अभी साउंड वेव्स के बारे में अगर बात की जाती है तो साउंड वेव्स का वेलोसिटी, जैसे अगर हम सपोज एयर के अंदर अगर देखते हैं तो वो इट इज ऑलमोस्ट अबाउट 330 to 340 मीटर पर सेकेंड। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ऑल्सो, बट इट इज अराउंड दैट. But if suppose the same sound is produced in water or liquid, we can see its velocity ranges from 720 or 790 and like this. तो मतलब 1000 के आसपास, 900 के आसपास वो आ जाता है। और वही साउंड वेव्स या मैकेनिकल वेव्स अगर पैदा किए जाते हैं सॉलिड्स के अंदर तो पता चलता है कि उनका जो वेलोसिटी है वो 1500 के आसपास आ जाता है। मतलब 1500 मीटर पर सेकेंड के आसपास के स्पीड से वेव्स जो है वो ट्रेवल करते हैं। that happens in case of the mechanical waves. And if we just see in the vacuum, तो वैक्यूम के अंदर ही तो वो ट्रेवल ही नहीं करता है क्योंकि वैक्यूम के अंदर पार्टिकल्स ही नहीं होते हैं, मीडियम ही नहीं है, तो नो मीडियम, velocity will be zero. Okay, so the velocity of sound or any mechanical wave is always zero when we produce it in the vacuum. बट लाइट के लिए उल्टा है, ये आप बात याद रखो ठीक से। लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट with the fastest speed in the vacuum, but its velocity just reduces slightly when it travels in the air or any gas, but it just decreases more in case when it travels into the liquid or water, and even it decreases still more when it travels into the still more denser, that is solids. तो solids के अंदर जब वो enter करता है तो सबसे कम से कम स्पीड से वो ट्रेवल करता है। तो ये उल्टी बात हमको याद रखनी है ठीक से, ठीक है ना? लाइट के बारे में उल्टा होता है, जैसे डेंसिटी बढ़ता है गैस टू लिक्विड या लिक्विड टू सॉलिड, तो जैसे डेंसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे स्पीड कम होता है, लेकिन वो लाइट वेव्स का या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। बट इन केस ऑफ द साउंड वेव्स और मैकेनिकल वेव्स, वी से द स्पीड और एक्चुअली इंक्रीजेस व्हेन द डेंसिटी इंक्रीजेस। ओके, ये एक बात है याद रखो ठीक से। दूसरी बात यह है कि अगर सपोज वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ऑफ एनी वेव एक्चुअली डिपेंड्स ऑन द मीडियम, इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम। जैसे हमने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है लैप्लास करेक्शन टू द न्यूटन्स फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, it tells us that the velocity of sound in any medium or any gas is given by root of gamma times pressure upon density rho. That means the velocity is controlled by medium. So far as the medium is constant, the velocity will be constant. Velocity will not change if medium is not changed. Remember. So suppose हमारे पास दो ट्यूनिंग फोर्क्स है, एक का फ्रीक्वेंसी है n1 और दूसरे का फ्रीक्वेंसी है सपोज n2। अभी ट्यूनिंग फोर्क का जो फ्रीक्वेंसी है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? उनका जो प्रॉन्ग्स का जो लेंथ होता है या उनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है या मटेरियल जिससे वो बने हुए होते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है।
और थिकनेस भी, ठीक है ना, वो तो प्रॉन्ग्स का जो थिकनेस होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर हमारे पास दो अलग अलग ट्यूनिंग फोर्क्स है जिनका प्रॉन्ग्स का लेंथ या थिकनेस अलग अलग है, तो उनका फ्रीक्वेंसी जरूर अलग अलग होगा, बिल्कुल। लेकिन वो जो वेव्स प्रोड्यूस करेंगे, उन वेव्स का जो वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी सेम ही होगा। How is it possible? Because wavelength will get adjusted. Okay, wavelength adjust हो जाएगा. So if we say that the wavelength of this first wave is lambda 1 and the wavelength of the second wave is going to be lambda 2, then we can apply the relationship between velocity, frequency and wavelength for this here to say that V is equal to n1 into lambda 1. Okay, this is equation number 1, suppose. And here if we apply this for the second tuning fork as well, we can get this V is equal to n2 into lambda 2, which will be given equation number 2 here. So in both of these equations, we can see clearly that this velocity is going to be the same, right? So since the velocity is same, we can just equate it and get this n1 into lambda 1, which is to be equal to n2 into lambda 2, okay? And this is the relationship between the frequency and wavelength in case when the two different tuning forks are sounded together in a same medium. हाँ, मीडियम अगर चेंज होगा तो फिर ये नहीं बोल सकते, लेकिन जब तक एक ही मीडियम के अंदर अलग अलग ट्यूनिंग फोक्स अगर अपने अपने वेव्स पैदा करते हैं, तो उनका प्रोडक्ट ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी विल रिमेन द सेम इरिस्पेक्टिव ऑफ द ट्यूनिंग फोक्स। मतलब ये इनका फ्रीक्वेंसी भले डिफरेंट भी होगा, तभी भी उनका प्रोडक्ट सेम होगा, ठीक है। सो दैट प्रोडक्ट विल एक्चुअली बी द वेलोसिटी, रिमेंबर। And this is the second thing we have to understand here. So in short, we can say that the frequency is inversely proportional to the wavelength, or wavelength is inversely proportional to the frequency, because just the product of frequency and wavelength remains constant. That means जिसका frequency ज्यादा है, ठीक है, जिस ट्यूनिंग फोर्क का frequency ज्यादा है, तो उसके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए वेव्स का वेवलेंथ कम होगा, और जिस ट्यूनिंग फोर्क का फ्रीक्वेंसी कम है, तो उसके द्वारा प्रोड्यूस किए हुए वेव्स का वेवलेंथ जरूर ज्यादा होगा। तो ये याद रखो ठीक से। एंड ऑल्सो ये भी याद रखो ठीक से कि ह्यूमन ईयर cannot hear all type of waves, but it can hear only the waves ranging from 20 hertz to 20 kilohertz. This is called as the range of audible frequencies. Okay, range of audible frequencies. Audible मतलब हम जो सुन सकते हैं वो, तो 20 हर्ट्ज के और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में के वेव्स के फ्रीक्वेंसीज के वेव्स जो है वो हम सुन सकते हैं, बट इसके 20 हर्ट्ज के नीचे के जो वेव्स है उनको बोलते हैं इंफ्रासोनिक्स। रिमेंबर, इंफ्रासोनिक्स मतलब the waves which have a frequency less than 20 hertz, okay, and greater than 20 kilohertz. तो 20 किलोहर्ट्ज से ज्यादा फ्रीक्वेंसी के जो वेव्स होते हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक्स। ये वर्ड्स भी आपको याद रखने हैं क्योंकि एमसीक्यूज के अंदर इनके बारे में पूछा जा सकता है। अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसीज के बारे में तुमने सुना होगा, लास्ट ईयर 10th स्टैंडर्ड में आपको एक एग्जांपल थे कुछ, जैसा कि सोनार सिस्टम जो होता है, तो उसके अंदर हमने देखा ऑलरेडी कि अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो समंदर का डेप्थ मेजर करने के लिए नीचे भेजे जाते हैं, और रिफ्लेक्टेड वेव्स जो होते हैं उनको लगने वाला टाइम और स्पीड, इन दोनों का रेशियो लेके हम उसका डेप्थ निकालते हैं। और इवन अल्ट्रासोनिक वेव्स के बारे में आपने ये भी सुना होगा, बैट्स जो है वो बैट्स अपना जो फूड है वो भी ढूंढते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स के बेसिस पे, क्योंकि वो कंटिन्यूसली अल्ट्रासोनिक वेव्स जो है वो इमिट करते रहते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड वेव्स होते हैं उनको कैच करके उनको पता चलता है उसका फूड का लोकेशन, एंड सो ऑन लाइक दैट। So these are the basic important points to understand. Now we will see two animations which will make your concept more clear in this chapter. The first one will be the stretched string. Okay. How the waves are produced, we can see clearly here. Yes.
ओके, अभी देखो यहाँ पे अगर हम एक पल्स देंगे, ठीक है, तो जैसे हमने एक पल्स दिया तो उससे क्या होगा, वो पल्स आगे ट्रेवल करेगा। देख रहे हो ठीक से किस तरह से वो ट्रेवल कर रहा है। Okay, if we see it in the slow motion, देखो इसमें क्लियरली देख सकते हो कि किस तरह से पार्टिकल्स जो है वो वन बाय वन ऑसिलेशंस में सेट हो जाते हैं। ये तो एक पल्स के बारे में हमने देखा। इफ यू जस्ट कंटिन्यू टू गिव द पल्स, सी हियर इट हैपेंस लाइक दिस। तो किस तरह से अलग अलग पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यूअसली ऊपर नीचे वाइब्रेट होते रहते हैं, लेकिन फेज सबका अलग अलग है। अगर देखा जाए, अगर इसका हमको मान लो कि वेवलेंथ मेजर करना है तो मेजर कर सकते हैं आराम से, क्योंकि हमारे पास अगर यहाँ पे अगर देखते हो, ये सपोज इनिशियल पॉइंट है, ठीक है, और यहाँ पे एक वेव कहाँ पे कंप्लीट होता है, देखो ठीक से। इफ यू जस्ट स्टॉप, एक सेकेंड के लिए अगर हम इसको पॉज करेंगे तो ये देखो, नाउ विल वी विल टू फाइंड आउट द वेवलेंथ। सी हियर, अभी यहाँ से वेव स्टार्ट हुआ है और यहाँ तक हमको वेवलेंथ मेजर करना है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस हम मेजर कर सकते हैं आराम से स्केल के ऊपर बेस्ड, और इसमें से हमको पता चल सकता है कि इट विल बी एक्चुअली 2.5 सेंटीमीटर। करेक्ट है, तो 2.5 सेंटीमीटर वेवलेंथ का वेव हमने यहाँ पे पैदा किया है। चलो ठीक है, अभी इससे भी आगे जाके अगर हम सपोज फ्रीक्वेंसी थोड़ा बढ़ाते हैं तो देखो क्या होगा। सपोज वी मेक द फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज, व्हाट विल हैपन नाउ। तो कुछ फर्क नजर आ रहा है, क्या फर्क पड़ गया। We can see clearly that the number of oscillations per second has been increased here. Even अगर सपोज हमने फ्रीक्वेंसी थोड़ा और बढ़ा दिया तो देखो क्या होगा। सपोज 3 हर्ट्ज हमने कर दिया, अभी देखो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, the frequency is increased and because of that the number of particles, number of oscillations per second is just increased like this. Even we can also measure the wavelength in this case also. Just try it. कितना है वेवलेंथ, कोई बताया क्या, चैट बॉक्स में डालो फटाफट। Yes, wavelength has decreased. How much is the wavelength? If you see, यहाँ से लेके यहाँ तक हमको मेजर करना है। नहीं सॉरी, यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये बन गया एक वेव, या ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक भी अगर करेंगे ना तभी भी वो वेवलेंथ ही कहलाएगा, नो डाउट। यस, 1.3 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, और 1.1 सेंटीमीटर वी कैन से, नो डाउट। ये देखो, yes, getting it. So in this way we can see the main important facts about the wave. चलो ठीक है, सो और भी बाकी जो चीजें हैं तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कल भी देखेंगे। चलो तो यहाँ पे हम ये लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।